Hello students, welcome to our YouTube channel. So students, this is a lecture of IBS, that is Indian Banking System. So we will move to our next topic in this subject, and it is today we will discuss about the functions of SBI and other things regarding SBI. So in first lecture of this is in our unit 2. We have discussed about a brief history of SBI and its objectives. So today we will discuss about the functions of SBI. So let's move on. So what are the functions of SBI? Number 1, SBI, State Bank India, acts as an agent of Reserve Bank of India and also performs the following functions. तो सबसे पहली बात करें, State Bank of India क्या है? It is an agent of Reserve Bank of India, that is RBI, और उसके अंदर में आने के बाद वो क्या-क्या functions perform करता है? That is बैंक borrow the money from public by accepted deposits. As usual जैसे अदर बैंक्स वर्क करते हैं वैसे ही ये भी वर्क करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट लेंड्स मनी टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर फॉर शॉर्ट पीरियड, मनी देना, लोन्स प्रोवाइड करना शॉर्ट पीरियड के लिए, हु नीड्स इट, बैंक एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स व्हेन रिक्वायर्ड, और एसबीआई बैंक जो है इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकर्स का बैंक मतलब बैंक का बैंक, बैंक का बैंक कैसे होगा? अब अदर कमर्शियल बैंक है, सपोज पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदर जितनी भी कमर्शियल बैंक है, सपोज किसी बैंक को कोई फंड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए और वो किसी और अदर कमर्शियल बैंक से उसको नहीं मिल रही, तो इस केस में वो कहाँ जाएगा? बैंकर्स टू बैंक, वो एसबीआई से हेल्प लेगा, और एसबीआई से हेल्प मिल जाती है, दैट इज वेरी गुड, और नहीं मिलती तो लास्ट क्या है? आरबीआई, ठीक है। देन बैंक ऑल्सो एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर कमर्शियल बैंक्स के क्लियरिंग हाउस का वर्क करता है। नेक्स्ट, SBI Bank also acts as Reserve Bank of India because the bank maintains the treasuries of state government. तो SBI जो है रिजर्व बैंक के बिहाफ पे भी वर्क करता है, जो अदर वर्क RBI करता है उस पर भी ये बहुत हेल्प करता है। It also purchases and sells of securities on behalf of its customers के बिहाफ पर परचेज करना, सिक्योरिटीज को सेल करना, ये भी एक SBI फैसिलिटी देता है। So these all comes under SBI functions. Now, what the products facilities SBI give to us? Investment banking facility, commercial banking facilities, retail banking facilities, private banking, asset management facilities, pensions, mortgages, credit cards. So these all are the products which comes under SBI. तो इस तरीके की फैसिलिटीज हमें SBI में मिलती है। नेक्स्ट वी विल मूव टू कॉम्पिटिटर्स। कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स होते हैं? एसबीआई के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैंने तो कुछ ही मेंशन करे हैं, मोर देन दिस, इससे ज्यादा भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मैंने तो सिर्फ पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सो दीज आर सम कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो सभी के होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू कम्युनिकेशन ऑफ एसबीआई। एसबीआई का कम्युनिकेशन किस तरीके से चलता है? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये कुछ कम्युनिकेशन के तरीके हैं एसबीआई के, जिसमें पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? कस्टमर सर्विस एंड वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स जो आपकी बात हुई है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स में क्या आएगा? ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, इंटरनेट, आउटडोर, डायरेक्ट मेल, तो इस तरीके की सारी चीजें किसमें आएंगी? कम्युनिकेशन के लिए मीडियम्स है कि एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, इंटरनेट, आउटडोर, डायरेक्ट मेल, ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट में आएंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स को प्रमोट कैसे किया जाए? It is the technique of marketing, gifts, discounts and other things we will offer it. Last, other one is publicity. Publicity कैसे होगी? Press conferences की जाए, special events की जाए, sponsorship की जाए, इस तरीके से publicity होगी। And next one is instructional material. Instructional material में network and website, ये चीजें आएंगी। So this is the parts which comes under the SBI communication. Next we will move to strengths and weaknesses of SBI.
वीकनेसेस होता है, हर कंपनी की स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से एसबीआई के भी हैं, तो हम एसबीआई के पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या है? ब्रांड नेम, आप भी जानते हैं एसबीआई का, इट इज अ बिग नेम, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, मार्केट का लीडर है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है, लो ट्रांजिशन कॉस्ट है, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्रॉफिट्स है। ये सारी चीजें क्या है? स्ट्रेंथ है, और ये हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज वीकनेसेस, हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वीकनेस हो सकता है। एनपीएस, एनपीएस मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं? आपने लोन ले लिया और उसके बाद उसको कुछ टाइम तक गवर्नमेंट का जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है उसके तक आपने कुछ उसके बारे में इंस्टॉलमेंट्स या कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, और कुछ समय के बाद गवर्नमेंट नोटिस भेज कर आपको बताएगी, फिर भी आप उसके लिए अलर्ट नहीं होंगे, तो एक टाइम के बाद बैंक क्या करेगी? उनको उन एसेट्स को एनपीए कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार दे देगी। सो दीज आर वीकनेसेस। जब लोग पैसा टाइम पे पे नहीं करेंगे तो एनपीएस ज्यादा बढ़ेंगे, तो एनपीएस बढ़ेंगे तो किसी भी कंपनी की ये वीकनेस होगी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो शॉर्ट में हमने दो चीजें पढ़ ली, एसडब्ल्यू पढ़ लिया, ओटी रह गया। एस एंड डब्ल्यू मींस एस मींस strength, W means weakness. Now we will move to O and T, that is opportunities and threats. So what are the opportunities that SBI have? It is financial inclusion, rural India, merger of associate banks with SBI. हमने पढ़ा भी था एसोसिएट बैंक के मर्जर्स के बारे में कि मर्जर्स कौन से एसोसिएट बैंक्स हैं? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है? एसोसिएट बैंक से एसबीआई। ग्लोबल एक्सटेंशन है, आज के टाइम में इंडिया में तो नहीं है, ग्लोबल का मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड। नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज है, ब्रांड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कॉर्पोरेट डिमांड फॉर क्रेडिट। So these all comes under opportunities of SBI. Next is threats. What are the threats? Advent of MNC banks. MNC is multinational corporate sectors. Changing interest rates and changing policies of RBI. Competitions in the retail segment. Private banks in the rural and semi-urban sector. And changing government policies. So these are some threats which the SBI is facing. SWOT analysis में 2 points हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहे हैं, करते हैं 2 points नेगेटिव एस्पेक्ट को। SWOT में S and O means strength and opportunities are of the positive aspects of an organization, and what are the other ones? W and T means weakness and threats. These are the negative aspects of the organization. So this all comes under the SWOT analysis of SBI. Next is SBI communication objectives. SBI की communication के objectives क्या हो सकते हैं? Increasing awareness and knowledge about new and existing products. भाई SBI का main communication किसी भी तरीके से communicate हो सकता है, maybe it is through advertisement, तो advertisement से भी हो रहा है, कोई भी अगर मोड हम यूज कर रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं? अवेयरनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं, बैंक के बारे में उसको वो जो अदर नई फैसिलिटीज और दे रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट, ग्रैब अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए, परचेज एक्शंस के लिए, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर्स एंड सेल्स। सो दीज ऑल आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ SBI. What is the logo and slogan of SBI? So what is the logo and slogan? The logo of State Bank of India is a blue circle with a small cut in bottom that depicts perfection and the small man, the common man. Being the center of the bank's business, the logo came from National Institute of Design, that is NID. NID की तरफ से बनाया गया है SBI का लोगो अहमदाबाद. On it was inspired by Kankaria Lake. तो आगे बढ़ेंगे, कंकारिया लेक से इंस्पायर्ड है और ये लोगो अहमदाबाद NID के थ्रू बनाया गया है। स्लोगन क्या होता है SBI का? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू
precious bank on us। तो ये कुछ स्लोगन्स हैं SBI बैंकिंग। इसका लोगो क्या है ये मैंने नीचे लिंक में आपके नोट्स में मेंशन कर दिया है। दिस इज द काइंड ऑफ लोगो और ये जो चीजें ये कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रही है SBI के। सो यहाँ पे एक स्लोगन मेंशन किया जो अभी अपने ऊपर स्लोगन पढ़े हैं, द वेलकम टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन या स्टेट बैंक में क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमने उसकी बात करी। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे लेक्चर का, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे स्टेट बैंक में। देखिए ये कुछ पर्सन के नेम मेंशन है कि स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। चेयरमैन हो गया, एमडीज हो गया मींस मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर्स BMDs, चीफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स DGMs, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स AGM, चीफ मैनेजर्स, मैनेजर्स DMs, डेप्यूटी मैनेजर्स AMs, असिस्टेंट मैनेजर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, क्लरिकल स्टाफ, sub staff. So these are the some members which comes under the organizational structure of SBI. So chairman and managing directors is only applicable for SBI. The organization structure of its associate banks and in deputy managing directors. तो SBI में सिर्फ ये दो पोजीशंस है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स की। उसके अलावा जो SBI के एसोसिएट बैंक्स है उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये दोनों पोजीशंस नहीं एप्लीकेबल होती हैं। वहां पे सिर्फ होता है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स तक। So this is the difference. So this is the diagram which I have given in your notes regarding organizational structure. अभी इन्हीं के बारे में मैंने ऊपर आपको सब कुछ बताया है। ये एक डायग्राम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम्स में डायग्राम जरूर बनाने चाहिए, इससे हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और एग्जामिनर को भी, चेकिंग करने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है। So this is all about SBI. तो इसमें लास्ट में थैंक यू एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोगो विच आई हैड मेंशन्ड इन इट। तो आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क टू मी और राइट इन द कमेंट सेक्शन। So this is all for today. Bye. Have a nice day.